वेलकम बैक टू ग्रोइंग क्राफ्ट फ्रेंड्स। और आज हम करने वाले हैं लिपन आर्ट। और यहाँ पर मैंने ले लिया है मेरा वुडन बेस। थोड़ा गड़बड़ करने के बाद नाउ वी आर बैक टू आवर ट्यूटोरियल। नाउ बिफोर वी स्टार्ट दिस वीडियो, प्लीज डू मेक श्योर दैट यू सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड लाइक करना ना भूलें, कमेंट करना ना भूलें। पहले मैंने अपने वुडन कोस्टर के ऊपर अपने राउंडर से आई एम मेकिंग द सर्कल्स। आई एम जस्ट गोइंग टू मेक द मार्जिन कि मुझे अपने लिपन आर्ट के लिए ग्लास मिरर्स कहाँ लगाने हैं। ये प्रोजेक्ट देखने में बहुत छोटा है बट दिस लुक्स रियली ब्यूटीफुल। आप इसको एज अ मैग्नेट भी यूज कर सकते हैं। यू कैन इवन यूज देम एज योर वुडन कोस्टर्स। आई एब्सोल्युटली लव लिपन आर्ट एंड दिस इज वन ऑफ द वेरी फर्स्ट ट्यूटोरियल व्हिच आई हैव शॉट ऑनलाइन। सो आपको ये वीडियो कैसा लग रहा है? डू लेट मी नो योर फीडबैक्स इन द कमेंट सेक्शन। मार्जिन्स ड्रॉ कर लेने के बाद अब हम यहाँ पर स्टिक करेंगे हमारे मिरर्स। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आप जो भी एडेसिव यूज़ कर रहे हैं वो बहुत अच्छा होना चाहिए बिकॉज योर मिरर शुड स्टिक रियली वेल टू योर बेस। अब इसके लिए आई वुड नॉट रिकमेंड फेविकॉल बट यू कैन चेक आउट फॉर द फेवी बॉन्ड्स, या आपके जो भी अगर आपको कोई और अच्छा एडेसिव पता है तो डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। मैं यहाँ पर यूएसए में हूँ इस टाइम पर, सो मैंने यहाँ का एक लोकल एडेसिव यूज़ किया है विच turned out to be really great. So यहाँ पे आप देखेंगे कि मैंने अपना मिरर स्टिक करना शुरू कर दिया है। So ये प्रोसेस दिस इज really थेरेपेटिक आई थिंक। अगर आपको फॉर अ चेंज इफ यू वांट टू टेक अ ब्रेक फ्रॉम योर रूटीन लाइफ, लिपन आर्ट इज वन ऑफ द बेस्ट आर्ट फॉर्म्स। सो Lippan art mein you can do a lot of variety. You can do with your ceramic clays, you can do with your air dry clays, you can even do them with your modeling paste. You just need some beautiful mirrors. Honestly, Lippan art karte waqt I really felt as if I'm doing a mosaic art. I'm a huge mosaic art fan. मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है. So I really liked doing mosaic art, and Lippan art is very similar I feel. इज दिस इसको करने के बहुत सारे डिफरेंट टेक्निक्स हैं विच आई रियली लव. So I tried to shot this video different angles, and I wanted to show you guys that how beautifully and how peacefully I could make my Lippan art. Like I said, this is the first tutorial, इसलिए हम बहुत basic and बहुत simple सा कर रहे हैं so that आपके लिए ये बनाना बहुत आसान हो. So just in case if you guys have any other ideas, let me know in the comment section. I will be more than happy to know. Just meanwhile doing this video, I realized that I could have actually used my plucker tool, जो मैं अपने paper crafting में use करती हूँ. I could have used that for aligning my mirrors. ये जो mirrors हैं ये मैंने Amazon से लिया था. If you guys want, let me know in the comment section. I'll try to possibly post the link. मैंने जो particular mirrors order किए थे, they were like very reasonable, and trust me, मैं ये एक coaster बना रही हूँ and I'm like literally hardly मैंने कोई number of mirrors use किए हैं. So you can make so many coasters with just few mirrors and your modeling paste. मैं wooden surface use कर रही हूँ. You can even use your ceramic bases or your metallic bases, and trust me, it's like you can do Lippan art on any surfaces. मैंने कुछ videos देखे थे जहाँ पे उन्होंने cardboard bases से भी बनाया था. I personally don't prefer that because I feel अगर आप कुछ बना रहे हो it should last long. So wooden base से best कुछ भी नहीं है. That is again my thought process. But if you like using your Lippan art in any of the different kind of bases other than these, let me know in the comment section. I will be more than happy to know. Finally, मैंने सोचा थोड़े और मैं अपने mirrors add करूँ, and I just kept on adding my adhesive and my mirrors, and trust me, जितना ज़्यादा mirror होता है उतना ज़्यादा सुंदर लगता है. But you also need to make sure कि जो आप अपना मॉडलिंग पेस्ट इसके ऊपर यूज़ करेंगे उसका कलर कॉन्ट्रास्ट इतना अच्छा होना चाहिए कि दैट इट शुड लुक रियली गुड विद द मिरर्स. So honestly, I really wanted to make something in like dark blue and red color, but then I felt that Lippan art is something जो बहुत festive feeling देता है, and nothing better than having our haldi kumkum shade. So that's the reason ये होने के बाद में I picked up my yellow shade modeling paste. And how did I created it? If you guys want to know, let me know in the comment section that how did I created my DIY Lippan art का paste. I will be more than happy to share that with you all. So अब हम इसको अच्छे से अप्लाई करेंगे. You just have to make sure कि कहीं पे भी बबल्स नहीं आने चाहिए, wrinkles नहीं आने चाहिए, कहीं पे भी एयर गैप्स नहीं होने चाहिए, और आपका जो बेस है वो पूरा अच्छे से कवर होना चाहिए.
सो इसके लिए आप अपना पैलेट नाइफ यूज़ कर सकते हैं. यू कैन इवन यूज़ योर ओल्ड credit cards, but I have a lot of sets of palette knife which I use for my sculpture painting artwork. So मैंने अपना palette knife use किया है and I will just make sure that I spread it evenly. ये थोड़ा tricky लगता है but trust me this is like super easy. आप एक बार करो you will get an idea कि आपको कितना pressure लगाना है and it is super 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 easy to make. सो लिपन आर्ट के लिए बहुत ज़रूरी है जब आप अपना मॉडलिंग पेस्ट वर्क लगा लें उसके बाद तो यू जस्ट हैव टू रब इट विथ योर लाइक क्लीन हैंड्स एंड ट्रस्ट मी जो मिरर है वो बहुत विजिबली दिखने लगता है बट यू हैव टू डू इट ओनली वंस इट हैज़ ड्राइड आउट अ लिटिल. अब ये पूरा फाइनल हो जाने के बाद इसको सील करना बहुत ज़रूरी है. ना हियर आई एम यूजिंग माई वार्निश. यू कैन इवन यूज योर मैसिव वार्निश एंड ट्रस्ट मी दे विल लुक गॉर्जियस. So with this my tutorial is done. I hope आपको ये लिपन आर्ट का beginners tutorial पसंद आया होगा. Let me know your feedbacks in the comment section and thank you so much for watching guys. Take care and bye bye.